tunaikan, kita telah menyembunyi daripada kewajiban kita kepada keluarga kita, kemudian kita telah tunaikan daripada kewajiban kita kepada istri, kepada anak, pekerjaan di kantor dan lain sebagainya. Kita sudah tunaikan. Tetapi apa kita sudah tunaikan daripada perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kita sudah tunaikan daripada maunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerjanya daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pentingnya apa itu berbeda dengan kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berbeda daripada kita. Beliau katakan tadi bahwasanya apa? Sebelum daripada tanggung jawab kita ini, setelah kita tunaikan, kita telah menyembunyi daripada kewajiban kita kepada keluarga kita. Kemudian kita telah tunaikan daripada kewajiban kita kepada istri, kepada anak, pekerjaan di kantor dan lain sebagainya. Kita sudah tunaikan. Tetapi apa kita sudah tunaikan daripada perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kita sudah tunaikan daripada maunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerjanya daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita hari ini pikirkan lagi, perlu kita hari ini renungkan lagi bahwasanya apa saya sudah mendawakan daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, apa saya sudah menyampaikan daripada kalimat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada saudara saya. Maka ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sudah menyampaikan daripada kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, saya ini akan menjadi pikir-pikir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadi pertolongan, menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan seandainya kita bersama dengan para nabi, orang-orang yang benar-benar kerja atas agama. कुल नफ्सिन जायक़ातुल मौत। दुनिया में अल्लाह ताला जिसको बनाया उसके लिए मौत जरूरी है। मौत उसकी जरूरी है। हम चाहे अल्लाह चाहे, हमारे दिल चाहे अल्लाह चाहे, हमारे नस्ली चाहे अल्लाह चाहे, मस्जिद हो या ना, मौत जरूरी है। कुल नफ्सिन जायक़ातुल मौत। तो हमको अल्लाह ताला दुनिया में भेजा तो तुम मौत की जिंदगी बनाते हो, क्योंकि दुनिया की जिंदगी थोड़ी, किसी को जिंदगी 10 साल तक, किसी की जिंदगी 20 साल तक, किसी की जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 100, इससे ज़्यादा नहीं होगी। फिर हमको क्या काम है? हमारे पैसा, हमारे घर, हमारी बीवी बच्चे कोई नहीं काम है, ईमान काम है, सिर्फ ईमान। उसको सलसर में कहा ईमान का किसको कहो जो ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में आते हैं उसको ईमान करते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी में हम कितनी अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम तो हमारे नाम की नाम से लगा देते हैं इस्लाम, लेकिन हमारा काम इस्लाम है क्या? काम हम इस्लाम की कर रहे हैं या नहीं? हमको दुनिया में किस लिए भेजो? सिर्फ हम अल्लाह की मदद का इसलिए कि अल्लाह ताला जितनी मखलूक, जितनी इंसान दुनिया में भेजा वो सारे इंसान को अल्लाह के घर में ले आओ, इस काम को जन्नत करना। क्योंकि क़यामत के दिन जब हमारे जन्नत का फैसला हो जाएगा, हमारी भाई नहीं होगी, वो हमको पीछे से पकड़ेगा और कहेगा दुनिया में तुम हमारी भाई थी, मेरी दोस्त थी, तो हमने हमारा अल्लाह ताला के घर में तैयारी कोई दावत नहीं, कभी नहीं दावत। क़यामत की दिन वो हमको लेकर जन्नत में इसीलिए दुनिया में हमको अल्लाह ताला भेजा इसलिए कि हम अल्लाह ताला की इतनी मखलूक, इतनी इंसान अल्लाह ताला ने बनाया, वो सारे को अल्लाह ताला के घर में गए। इसीलिए हम एक जामा अल्लाह ने इस्राएल वो नबी वाला काम की तरह हमेशा देते हैं। तो हमारी चाहत है हमारी सारी बातें तैयार है, रात की 10 हो, दिन की 10 हो, कोई मसला नहीं, आप हमको लेके जाइए। आपकी बच्चे
उसको नमस्ते मिलाने के लिए कोशिश करेंगे कि भाई मस्जिद में नहीं आ रहा है, हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमको जरूरत है। सिर्फ जन्नत हम नहीं जा सकते, अगर हम उसकी पीछे मेहनत करें, उसको भी मस्जिद में ले आए तो हमारे लिए जन्नत है। इसके सिवा हमारी जन्नत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह ताला की हुक्म अदा कर दिया, नमाज अदा कर लिया, रोजा रख लिया, हज किया, ज़कात अदा कर लिया तो हमारे लिए जन्नत वाजिब है। ऐसा नहीं, हमारे लिए जन्नत तब होगी जब हम हमारी बहन को, हमारे पापा, हमारी सबको फैमिली सबको मस्जिद में ले आओगे तब हमारे लिए जन्नत वाजिब है। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि हमारे घर में जितनी आवश्यक इंसान है रजुल ने सारी रजुल को मस्जिद में ले आए। सब तैयार है इंशाअल्लाह। Sejak dia menjawabkan dalamnya kemudian akan menentunya macam-macam. Hari ini dia berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Subhanahu Wa Taala katakan, Allah Subhanahu Wa Taala beri nyawa, maka pasti akan mendapati yang namanya kematian, akan menentunya namanya kematian. Maka ini dia berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kematian dinyatakan, apa sebenarnya yang perlu kita persiapkan? Apa sebenarnya yang perlu kita tunaikan? Maka beliau katakan bahwasanya sebelum datangnya kematian, maka kita banyak-banyak memperbaiki daripada amal. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala sudah datangkan kita di masjid. Allah Subhanahu Wa Taala sudah gerakkan kaki kita di masjid. Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kita kekuatan untuk bisa menjaga yang namanya sholat berjamaah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana? Kata beliau, bagaimana dengan orang-orang yang di rumah kita? Bagaimana dengan orang-orang yang tetangga kita, satu kampung kita? Bahkan bagaimana kita berpikir, bagaimana seluruh manusia ini bisa masuk di dalam masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengerjakan perintah Allah, bisa mengerjakan daripada sholat berjamaah. Ini adalah pikir kita. Kata beliau tadi katakan bahwasanya apa? Hari ini orang berpikir bahwasanya dengan sholat saya akan masuk surga, dengan sedekah, dengan zakat saya akan masuk surga, dengan berhaji saya akan masuk surga, dengan mengerjakan daripada puasa sebulan penuh maka saya akan masuk. Betul hanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagaimana dengan tanggung jawab kita? Bagaimana dengan tanggung jawab kita dengan saudara-saudara kita? Kata beliau, kita ini hidup dalam keadaan bermasyarakat. Maka bagaimana dengan teman-teman kita? Di kiamat nanti ada kata beliau, hari kiamat nanti akan datang daripada orang-orang akan menuntut kita. Hai teman, dulu kita ini bersahabat, kamu tidak pergi ke masjid, tapi kamu tidak pernah mengajak saya, kamu tidak pernah mendakwai saya juga Pak, untuk bisa mengerjakan sholat juga di masjid, untuk bisa juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini semua akan datang kepada kita, akan meminta daripada apa? Meminta daripada pertanggungjawaban. Si fulan ini dan itu, belum lagi anak istri, belum lagi orang tua, belum lagi tetangga dan sebagainya. Akan datang semuanya pada hari kiamat. Akan menemui kita bahwasanya si fulan ini pulang pergi ke masjid, ibadah, keluar 40 hari, 4 bulan, 3 hari, tapi tidak pernah mengajak saudara-saudaranya juga, tidak pernah mengajak tetangganya juga, untuk bisa keluar, untuk bisa mencicipi daripada kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita tidak
untuk mengajak saudara-saudara kami, untuk mengajak saudara-saudara kami bagaimana sama-sama taat kepada Allah, kemudian saudara kami menjauhkan. Kami juga mengajak orang-orang saudara-saudara kami di sini untuk mengajak saudara-saudara kami. Jadi bukan cuma kami saja, tetapi orang seluruh manusia. Karena hal ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita dikatakan bahwasanya kematian ini, umur kita ini bukan cuma 10 tahun saja, 20 tahun saja, paling banyak umur ini 100 tahun ini kalau lebih ini sudah terlalu banyak urusan. Makanya kita dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala di umur kita yang sedikit ini, yang kita tidak tahu kapan ini namanya kematian, maka kita dapat berbanyak daripada mengajak daripada saudara kita, mengajak daripada saudara-saudara kita untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak mereka untuk mau keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sebenarnya berkata, semua bersedia insyaallah. Palu. Insyaallah istimewa Palu. Ini mahala berapa orang laki-laki? Jamaah. Ini mahala adanya berapa orang laki-laki? Sejamaah masjid. Berapa? 35 kakak. 30 rumah disediakan. Berapa musolli? Kita musolli pasti. Berapa orang jemaahnya di sini? 10 orang kapan? Tapi ada Sedikitnya kemana? Hah? Sedikitnya kemana? Dekat-dekat masjid sini semua. ya. Masjid Raya, Salam, Rawa. Alakia Juli istimewa Juli 20, 21, 20. Janda-janda banyak di sini, janda-janda. Ya. Janda-janda banyak. Juli istimewa 21, 20, 23 hari. Untuk Juli kami istimewa sama siap insyaallah. Insyaallah. Sudah kami istimewa 4 bulan hari, 4 bulan berapa orang? Sudah kami istimewa. Insyaallah 8, 9 orang. 9 orang sudah. Mencapai satu jamaah. Satu jemaah. Insyaallah Allah insyaallah. Amin. Apa? Amirnya Maulana. Ya, Maulana. 15 Tazkir Maulana amirnya. Insyaallah. posisi ini. Ah, ya lah. Insyaallah. Insyaallah. अब उस लोगों की भी कोशिश करो कि वो भी अल्लाह के रास्ते में काम करें, क्योंकि वो की बात हमारी ये जो इसको काम आ रहा है वो काम नहीं है। ये जमा बांग्लादेश 2 kali stroke, ini 1 kali stroke, 1 orang 2 kali stroke, वो अल्लाह के रास्ते निकलते वो stroke की मसाला नहीं बनाया, वो मसाला बनाया ईमान। आपको आपकी भाषा नहीं आती है, आपको हमारी भाषा नहीं लगती, ये मसला नहीं है। भाषा की का मसला ही नहीं। ईमान है सब, ईमान नहीं है कुछ नहीं। इस ईमान को लिए हमको ले Jadi jemaah mereka ini juga ada 2 orang yang mengenal itu. Kalau ini sampai ada yang mengenal itu, dia selama hari ini ada jemaah yang itu. Tapi kata beliau setuju tidak ada masalah. Yang masalahnya adalah kita ini tidak punya iman. Kalau mereka meninggal maka tidak masalah. Yang masalah itu kalau mereka tidak punya iman. Maka hari ini dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ini setuju jalan Allah masalah, tapi yang masalah ini ketika kita sudah meninggal bagaimana dengan kita, bagaimana dengan amal kita. Ini perlu kita hari ini pikirkan. Adanya bapak-bapak ini yang dulu keluar, beliau mengajak bapak untuk mau coba-coba juga. Keluar 3 hari. Insyaallah. Minimal 3
hari insyaallah insyaallah वो एक तारीख हो सकती है कि यहाँ के वो तारीख में 3 दिन के लिए जमात होगी कि हम देते रहते या गाड़ी की रात हो सकती Pak imamnya di sini mau keluar 3 hari. insyaallah Puncung juga itu yang kacamata juga ini nih. Kacamata mau keluar. nanti tentukan tanggalnya kapan kita mau keluar, baik nanti jamaahnya di sini masih di sini atau setelah jamaahnya pergi. Jadi kita niatkan untuk mengakhirkan dari hingga kapan kita mau keluar, insyaallah. Insyaallah 3 hari itu. 3 hari bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.